The topic for today's lecture is load line of a diode. Load line analysis of diode. Load line analysis of a diode. Load line, let me write that also for your convenience. Load line analysis. Yes, please. But without attendance. Remember that this load line analysis, point number one that you will write in this, it is a graphical method of analysis. This load line analysis is a graphical method of analysis of a diode. Now what do I mean by graphical method? That we will use the graph, or I would say VI characteristics of a diode to do our analysis. Analysis क्या करनी है वहाँ बाद में देखेंगे. पहला पॉइंट ये है कि ये ग्राफिकल मेथड ऑफ एनालिसिस है. लिखते जाओ साथ साथ, आज लिखना काफी है. So first point is that it is a graphical method of analysis. Point number one. Point number two is ये लोड लाइन हम वहां पे यूज करते हैं. देखो, लोड लाइन इज या लोड लाइन एनालिसिस इज यूज्ड फॉर नॉन लीनियर सर्किट्स. लोड लाइन एनालिसिस हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें सर्किट को जो होगा, या मैं कहूं सर्किट का बिहेवियर जो होगा वो नॉन लीनियर होगा. What do I mean by linear behavior? If I have a resistor, the voltage to current relation is linear. Okay, and it is related by R, because we know V is equal to I into R. Okay, so I is equal to V by R. So R basically decides the slope and all वगैरह जो भी कुछ है. ठीक. So this graph is linear. However, this graph is get my point? That means the two parameters are not changing linearly, but one parameter is increasing to a great deal, but another parameter is not showing a linear scale of change with the other parameter. Is that okay? Here, if I say this was 0, this is 5, I expect this also to be 5. Now, this is 10, I also expect this to be 10. Get my point? But here, when this goes to suppose 10, but this still is only 2. Okay? Now, maybe this goes just 15 and this is 20. So, there is no linear relation. Okay? There is a non-linear relation. Samajh aaya? So, load line analysis will be used in circuits which are non-linear. Please write this in quotes. Next point. Yeah, आप लिखिए. That is those circuits which do not obey Ohm's law. Okay? क्योंकि V is equal to IR क्या है? एक form of Ohm's law. But remember this also, that there are different forms of Ohm's law in electronics and communication. V is equal to IR is one form of, or I would say first form of Ohm's law. J is equal to sigma E can be another, and something other relations can be there. But this is just one form. Next point. Here we will be using load line analysis. अब मैं ऐसे लिखूंगा LLA for a diode. यहाँ पे हम जो काम करने वाले हैं, हम लोड एनालिसिस एक डायोड के लिए यूज करेंगे. ठीक. तो लेट्स ड्रॉ द सर्किट. बेटा मैं कंफ्यूजन नहीं चाहता हूँ, ना ही दूसरे पे डिपेंडेंट रहूँ. दूसरे पे डिपेंडेंट रहे ये टॉपिक समझ नहीं आएगा. मुझ पे डिपेंडेंट रहो इस टाइम फॉर टाइम पे. ना ही मजाक ना ही कुछ, बिकॉज दिस इज डिफिकल्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट बट वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है.
That's why I have this also for you. Coming back. So let's draw the circuit first. So step number 1 to go for, अब actually heading रहेगी ये typically load line analysis general. Now typically load line analysis for a diode. So first of all I need to make a circuit, right? So let this be V, positive, negative. I have my diode D1 which is connected to a load resistance RL. So then this be my load resistance RL. Okay, is this visible in the screen by the way? Yes, it is. So therefore, what will be the current through this circuit? I can denote that by ID and a potential drop across diode by VD. Any objections on that? Yes or no? Fine. Let's move ahead. Next step आप लिखिए. So ये circuit बना लिया सबने? बना लो जल्दी से. Current through the diode. Current through the diode. इसमें लिखो. A load line current through the diode by ID. This is understood. ID flow करेगी current through the diode, and since this is a series circuit, so current through the resistor also. मैंने कहा ना किसी और पर डिपेंडेंट रहो, मुझसे पूछो. क्या? इधर पीछे क्यों बैठे तुम? जल्दी इधर आ गए जब. जल्दी से. रोज का प्रॉब्लम नहीं चलेगा. प्रॉब्लम है तो रेक्टिफाई करो, आ गया. Okay. So I said ID is the current through the circuit actually simply क्योंकि सीरीज सर्किट है ना. समझे मेरी बात? तो सीरीज सर्किट में मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है डायोड एंड रेजिस्टर. बाय सर्किट देयर इज ओनली वन सर्किट और वन लूप ओवर हियर. तो जो करंट ID में से जाएगी वही RL में से भी जाएगी. Not a point to emphasize. You right? A load line represents, ये important point है इसका. A load line represents, next line, circuit बना लिया? तुमने नहीं बनाया सर्किट. अरे पेंसिल छोड़ो यार, पेंसिल बनाओ. ओके. नहीं अब बोरोड पेंसिल से भी नहीं बनाओगे, ये तो कुछ ज्यादा ही खुदारी हो गई. चलो देखिए. So a load line represents the constraints. A load line represents the constraints which the other parts of the circuit place on the diode. And load line represents the constraints which the other parts of the circuit place on the diode. That is how they make a diode. That is how they make a diode to behave practically. In a circuit placed on the diode, उसके बाद that is how they make a diode behave practically in a circuit. जब हम physical circuit बनाएंगे ना, वहां पे हमें क्या वोल्टेज वैल्यू से क्या वैल्यू आउटपुट में आएगा ये डिटरमाइन करता है. ये हमें पता चलता है लोड लाइन से. मतलब आपने सपोर्ट वोल्टेज रखी कुछ 5 वोल्ट, तो वहां पे आपका आउटपुट करंट वैल्यू क्या आएगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमें लोड लाइन बता सकती है. अब हम या तो हमें फिजिकली प्रैक्टिकल करना है जैसे हमने कल किया, तो कितनी दिक्कत हमें हुई. ये इनपुट दो, वो दो, ये दो. या तो हमें दूसरा मेथड है कि हम लोड लाइन एनालिसिस से कुछ चीजें पता कर सकते हैं. वी कैन फाइंड सर्टेन वैल्यूज कि इस इनपुट पे आउटपुट क्या होगा, वी क्या होगा. So let's now start the load line analysis. Actually, we start by step number 1. आप लिखिए साइड में, ये आंसर में नहीं लिखेंगे आप स्टेप नंबर 1, लेकिन आप खुद को याद रखने के लिए applying. So यहाँ पे आप let's start it now. यहाँ से exactly load line analysis की start होगी. Applying KVL in the circuit. KVL अप्लाई करना है, ठीक है. किस किसने देखा KVL क्या होता है? Raise your hand. 1, 2, 3. They are making a difference. ठीक है.
I said that आपकी इस क्लास में बैठना ही काफी है पास होने की. Reason is this that you follow what I say, not just you be here and आपका दिमाग कहीं और वो नहीं. Because if you are here, I am sure that you will follow what is said. अब देखो मैं ये दिखाऊंगा 90% बच्चों को समझ नहीं आएगा, मेरी गलती नहीं है because I'm not supposed to teach now KVL also. But anyways, I'll give an idea, brief idea. यहाँ पे हम जब KVL लगाएंगे इस लूप के अंदर, इसमें कौन सी करंट फ्लो कर रही है? ID है ना, कोई और करंट है दूसरी? नहीं. अब यहाँ पे डिफरेंट वोल्टेजेस है. KVL एक्चुअली होता क्या है? KVL is nothing but it is the sum of all the voltages. KVL relates to sum of all the voltages and it says that the sum of all the voltages is zero. But if I take this voltage on one side and all other voltages on the other side, the net effect has, or on the same side rather, net effect has to be zero. What I mean to say is that minus V प्लस VD जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है वो पॉजिटिव पॉइंट होता है, जिधर से निकलती है वो नेगेटिव पॉइंट होता है. प्लस VD प्लस IDRD राइट इज इक्वल टू जीरो. ये होता है KVL. ये समेशन ऑफ, मैं बताता हूं, समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज इक्वल टू जीरो. अब आपकी आसानी के लिए मैं क्या कन्वेंशन फॉलो करता हूं, जो भी सामने वोल्टेज सोर्स है ना उसकी जो साइन सामने है वही लिख लो. आइज ऑन बोर्ड. केवीएल अप्लाई करने के लिए सिंपल रूल ये है जो आप मैं कन्वेंशन फॉलो करता हूं, आसान वाला. जो भी वोल्टेज सोर्स की साइन आपको दिख रही है पहले, जब आप नीचे से शुरू करोगे सर्किट में आगे 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 चलना, इस पॉइंट तक वापस आओगे तो पहला सोर्स आपने कौन सा एनकाउंटर किया? V. उसकी कौन सी साइन पहले एनकाउंटर की? माइनस साइन हमने यहां पे लिखी. आइज ऑन बोर्ड एवरीवन. हो गया ये सोर्स खत्म. नेक्स्ट सोर्स कौन सा है? VD. रादर एक्चुअली डायोड है, लेकिन डायोड के ऊपर चूंकि पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, हम डायोड को भूल जाते हैं, हम बस पोटेंशियल ड्रॉप को याद रखेंगे. ठीक है, द पोटेंशियल ड्रॉप रिप्रेजेंट्स द डायोड, समझो एक हिसाब से. ठीक है, सो पोटेंशियल ड्रॉप इज VD. अब VD की कौन सी साइन पहले आई? पॉजिटिव. क्या साइन ली मैंने? पॉजिटिव, और VD आ गया यहां. अब तीसरा सोर्स है ये, जहां से करंट एंटर करती है ना रेजिस्टर में, वो वाला पॉइंट पॉजिटिव होता है, जहां से निकलती है वो नेगेटिव. सो कौन सा पॉइंट सामने आ रहा है इस ड्रॉप? इसमें ड्रॉप क्या होगा बाय द वे? ID into RL, because this is the voltage. VR is equal to ID into RL. तो मैंने सीधा VR का लिख ही देता हूं यहां पे VR. अब मैंने VR के बदले सीधा लिखा क्या? ID into RD. गलत किया? नहीं, सही है. कौन सी साइन आई सामने? प्लस. इज दैट क्लियर? इसको क्लियर नहीं है वो केवीएल एक बार देख लेगा क्या है इसके बाद. ठीक है, हाँ, सॉरी नॉट RD, इट इज RL. थैंक यू. RL, ID into RL. Okay, so if I just rearrange this equation, it becomes V is equal to ID RL plus VD. Am I correct? So this becomes your equation 1. इसको मार्क रखो एज इक्वेशन 1. नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप 2 लिखिए. Step 2 is, now we will draw the characteristics of the diode. Step 2 is draw the characteristics of a diode. Yeah, draw the forward bias characteristics लिखिए फिलहाल के लिए, because हमने जो सर्किट बनाया है ये फॉरवर्ड बायस सर्किट है, रिवर्स बायस. So draw the forward bias characteristics of a diode. ठीक है, इस साइड से क्या होता है? ID, और इस साइड से VD. Am I correct? ठीक है, okay. This tells me that as we increase V beyond a point V gamma, our current will increase exponentially. यही है ना ये ग्राफ, वही बोला. ग्राफ बढ़ना आता है ना,
सही है? ओके, नाउ स्टेप नंबर 2 क्या था? Draw VI characteristics. Okay. Step number 3. To draw the load line on this graph. अब हमें इस ग्राफ पे लोड लाइन बनानी, ठीक है? जब भी हम जी 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 समझ क्या? छोड़ो उसको, बस ग्राफ। हाँ, या तो जोर से बोलो, मैं समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली। बोलो बोलो, आप ही ज्यादा नहीं बोलो, बोलो। उससे अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वो चेंज नहीं होगा, वो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज रहेगा। वी इन इंक्रीज करने का आईडी चेंज। आप जो कंसेप्ट बता रहे हो ना, मतलब आपके जो फॉरवर्ड बायस डायोड होगा तो वो फिर स्टैटिक रहेगा, ये कह रहे हो ना? For time being, let's assume this for time being. Let's see what happens later. I'll also figure that out, whether your question is valid or it's not valid. But मेरे ज़हन में इसका exactly answer नहीं आ रहा आपको, that I can share with you. But for time being, let's assume this as valid, because हमारा मकसद कुछ और असली identify करना है, that is operating point of a diode. ठीक है? Let's see how we do that. Okay. But I will consider this as a question, valid question. Okay. Now, to draw the load line, if I draw any line, suppose like this or this, I need to know the 2 points. One on this axis, I repeat, eyes on board please, eyes on board. If I want to draw any line like this that crosses this graph or these characteristics, I need to know at least 2 points. Say for example, मुझे एक simple line बनानी है। इस लाइन को बनाने के लिए हम जो मैथ्स में 8th क्लास में बनाते थे, कैसे बनाते थे? मुझे ये पॉइंट्स, सपोज कोई ग्राफ है, ये हवा में कहीं लाइन है, तो मुझे ये कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए थे। लेट्स दिस बी x1, y1 एंड ये कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए x2, y2, राइट? एम आई करेक्ट? सो जी, आई नो that's okay, but अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना काफी है। सो लाइकवाइज आई नीड टू आइडेंटिफाई 2 पॉइंट्स एट लीस्ट, one on this axis, another on this axis. So to draw, I take 2 cases. Case 1, when इस एक्सिस पे ID 0 है या VD 0 है? इस एक्सिस पे ID 0 है, VD 0 है, राइट? इस एक्सिस पे कौन 0 है? So step number 1, let me assume that when VD equal to 0, what will happen? When VD is equal to 0, we'll find ID from equation 1. मतलब ये हम VD पुट करेंगे इसमें 0, equation 1 में. Therefore, equation 1 becomes, equation 1 क्या बनेगी? V is equal to IDRL plus 0. Am I correct? यहां से हम ढूंढेंगे वैल्यू ऑफ ID, which is equal to ID will be equal to V by RL. Note this down. Note this down, please. Note it. Or else I can write it this way: VD is equal to V by RL when, ID is equal to V by RL when VD is equal to 0. सही? Is that okay? So let's step number, not a step number, but next step, case 2 नहीं. Next step इसी में है कि let's plot this point on this axis. Can you plot this point on this axis? पहले बताओ ID is equal to V by R कहाँ पे होगा? इस एक्सिस पे होगा या इस एक्सिस पे होगा? इस एक्सिस पे होगा, बिकॉज मैं कह रहा हूं ID का एक नॉन जीरो वैल्यू है V by R. लेट दैट बी 5 और 10 और 20. VD का वैल्यू कितना है? लेट मी फर्स्ट आइडेंटिफाई दिस पॉइंट, ये कहां पे आएगा? एक मिनट रुको.
तो ये वाला जो है मुझे इसको प्लॉट करना है। ये कौन सा पॉइंट बनेगा? ये बनेगा VD0 because VD is along x-axis. I feed it. VD is 0 while as ID is equal to V by RL. I will plot this point on this graph. Write this now. Is that easy now? VD का वैल्यू 0 है, ID का वैल्यू है V by RL. It has to be some point in the graph. But since VD is 0, आपने अभी खुद कहा VD 0 किस एक्सिस पे होगा? सॉरी, हाँ, VD 0 किस पॉइंट कहां पे होगा? इस वाली पूरी एक्सिस पे VD क्या होगा? 0. So let me mark some point over here which is a non-zero point and उसका वैल्यू में क्या लेता हूं? V by RL. तो ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करता है 0 कामा, am I correct? किसने नहीं समझा रीजन है? किसने नहीं समझा रीजन है? वन तो तुम अब तो उच्च की बात इस क्लास और कोई जिसको नहीं समझ आया? ओके, आई विल रिपीट इट वेरी क्विकली. कहां से समझ आया? ये केस समझ आया? हाँ, देखो हमने क्या किया, हमने इक्वेशन 1 ये बनाई. आइज ऑन बोर्ड एवरीवन प्लीज. हमने इक्वेशन 1 ये बनाई, ये सर्किट को केवीएल अप्लाई किया. ठीक है, इसमें अब दो वेरिएबल है हमारे, आईडी और वीडी. हमने आईडी प्लॉट किया है अलोंग वाई एक्सिस, वीडी प्लॉट किया है अलोंग एक्स एक्सिस. ओके, अब हमें दो पॉइंट्स निकालने हैं लोड लाइन बनाने के लिए, सो दैट वी कैन ड्रॉ अ लाइन बिटवीन दोस टू पॉइंट्स. क्यों? क्योंकि हमें पता है जब भी हमें कोई लाइन बनानी होती है हमें दो पॉइंट्स पता होने चाहिए. ठीक, अब टू मेक द सॉल्यूशन पॉसिबल we don't have any value for these, so we have to take value 0 for one of the variables and find the other variable, right? So case 1 we take VD equal to 0 in this equation. VD को 0 किया, end result आएगा V is equal to ID into RL plus VD, क्योंकि हमने 0 लिया deliberately analysis के लिए. तो ID का वैल्यू वहां से ढूंढेंगे. ID निकला V by R, तो ID निकला V by R. VD को हमने सेट किया है 0. तो जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करने जाएंगे वी कैन फाइंड द पॉइंट फर्स्ट. आईडी का वैल्यू क्या है? V by R, वो मैंने एज इट इज लिया. VD मैंने ही सेट किया कितना? 0. तो पॉइंट जो निकला वो क्या निकला? 0 कामा V by R. इसके बाद अब अपना दिमाग लड़ाओ कि ये पॉइंट कहां पे होगा. ये पॉइंट ऑब्वियसली इस एक्सिस पे होगा क्योंकि VD का वैल्यू है 0 इस पूरी एक्सिस पे और ID का वैल्यू है कोई भी नॉन जीरो वैल्यू. मैं ये पॉइंट बजाय यहां भी ले सकता हूं, ये कोई फिक्स्ड नहीं. ठीक है ना? अब मैंने थोड़ा टुवर्ड्स हायर साइड भी लिया बिकॉज़ उसके बाद एक दूसरा ग्राफ आएगा उसके नीचे आएगा किसी रीजन से, वो बाद में देखेंगे. इसी तरह केस 2 जरा आप खुद बनाओ. एवरीवन प्लीज मेक केस 2. केस 2 क्या है? यस, केस 2 मुझे अब दूसरा पॉइंट यहां पे ढूंढना है कहीं पे. केस 2, वेरी गुड, शाबाश, लिखिए जरा. केस 2, पुट to find case 2 we put ID equal to 0 in equation 1 and find VD. थोड़ा समझ? to plot to find the second point for case 2 we put, देखो case 2 we put ID equal to 0 in equation 1 and find the value of VD. पुट करो जरा, मुझे रिजल्ट बताओ क्या आएगा. minus V is equal to minus V. ठीक है, minus V equal to V. V is equal to V. देखो सर माइनस, देखो इक्वेशन 1 की हमारी V is equal to ID RD plus VD थी ना. आपने अब ID को पुट कर लिया टू 0, तो ऑब्वियसली वी विल हैव VD equal to V, राइट? अब इसका इक्विवेलेंट पॉइंट निकालो ना, क्या है जिसको प्लॉट करना है. पॉइंट क्या निकलेगा? x एक्सिस है V वाली, सो VD का वैल्यू आप V ले रहे हो, सो पॉइंट निकलेगा V, 0. ठीक है, जिसको समझ नहीं आ रहा है इतना एक्सप्लेन करके भी वो एक बार रिवाइज करेगा, उसको ये ऐसे समझ आएगा. V, 0 पॉइंट निकला, इसको प्लॉट करो जी यहां पे. सो ये वाली एक्सिस पे एक नॉन जीरो वैल्यू, आई डोंट नो प्लीज, ये वाली एक्सिस पे मैंने एक नॉन जीरो वैल्यू लिया है V. मैं यहां भी ले सकता हूं, यहां भी, लेकिन मैंने थोड़ा टुवर्ड्स एक्सट्रीम हेल्प दिया. ID का वैल्यू इस पूरी एक्सिस पे क्या है? एवरीवन प्लीज, ID का वैल्यू इस पूरी एक्सिस पे 0. So this point corresponds to V, 0. To draw my load line, now next point is next step rather, step 4. Step 4 is connect these two points by a line, which is this.
connect these 2 points by a line which is this. It can be observed, eyes on board please, यहां पे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स और आपकी ये लोड लाइन, eyes on board, यहां पे इस पॉइंट पे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स और आपकी लोड लाइन इंटरसेक्ट हो रही है. इस पॉइंट को हम कहते हैं क्यू पॉइंट. बस इतना याद रखो, क्यू पॉइंट. वो होता क्या मैं बताऊंगा. It can be observed that the characteristics, it can be observed, step number लिखना 4 आपने, connect this and this. It can be observed that the VI characteristics या forward VI characteristics and load line, थोड़ा तेज लिखो. It can be observed that the forward VI characteristics and the load line intersect each other at a point. Intersect each other at a point which is known as the operating point of the diode or Q point. Which is known as the operating point of the diode or intersecting each other at a point, comma, which is known as operating point of the diode or Q point or quiescent point or quiescent point. Operating point of the diode or quiescent. Q-U-I-E-S-C-E-N-T. Q-U-I-E-S-C-E-N-T. Quiescent point. ठीक है? And the corresponding voltage value is denoted by VDQ and current value is denoted by IDQ. Okay? Voltage value. And the corresponding voltage value is, eyes on board please, ये मैंने बताया. Corresponding voltage value is denoted by VDQ and current value by IDQ. ठीक है? So इसका मतलब है हमारा जो quiescent point है वो डिपेंड करता है हमारे V पे और RL पे, है ना? Actually. Okay. Next point. AB, yeah, mark these points as point A. Eyes on board, mark this point as point A and mark this point as point B. The line AB is a straight line. The line AB is a straight line, or I would say the load line AB is a straight line and must follow. The load line AB is a straight line. How many minutes to go for the class? 5 minutes. That's enough. That's enough for me. The load line AB is a straight line and must follow the equation of a straight line, which is y is equal to mx plus c, and must follow y is equal to mx plus c. Must follow the equation of a straight line. Must follow the equation of the straight line, that is y is equal to mx plus c. In order to relate it with the equation of the straight line, let's divide equation 1 by RL on both sides. Let's divide the equation 1 by RL on both sides. Therefore, equation 1 becomes V divided by RL is equal to ID RL by RL plus VD by RL. Am I correct? This was the equation. But to relate it with y is equal to mx plus c, हमने क्या प्लॉट किया है y एक्सिस से? देखो भाई इतना जाते हो, मैंने कहा किसी और की तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखो बच्चे. क्या मिसिंग है इसको? क्या मिसिंग है? कहाँ पहुंचे?
कहाँ पहुंचे? हो गया सर। फिर इधर देखो, तो ये है y is minus plus c. Now to relate the equation 1 with straight line equation, we actually divide it by RL. ठीक? अब मैं बताऊंगा क्यों हम ऐसा कर रहे हैं. So ये बनी रिजल्टेंट. Therefore equation 1 becomes as, ये लिख लिया सबने? ये लिख लिया सबने? RL क्या है? RL खुद सोचो आप क्या है, या फिलहाल लिख लो. आपको नहीं दिख रहा है RL क्या है? ये कोई सवाल है? क्या है RL? आपने तो बोला था R D नहीं RL. ये नहीं चलेगा, ये सवाल नहीं बोले होते. नहीं कंफ्यूजन के लिए बोलते कोई बात नहीं, बट जब टाइम कम हो तब ऐसे सवाल अवॉइड नहीं करना चाहिए, अपने अंदर ही रखना. जब टाइम कम हो, वरना जनरली बीच में पूछ सकते हो, इट्स ओके. बट सो दिस इज द इक्वेशन दैट बिकम्स. ठीक है? नाउ यू टेल मी, इन ऑर्डर टू रिलेट इट विद दिस इक्वेशन, हमने देखो ये क्या है, थोड़ा सा ये ध्यान से सुनो. अब मुझे बताओ हमने y एक्सिस से क्या प्लॉट किया है? ID. Therefore मुझे कोशिश करनी है कि ID मेरे किस साइड से हो, लेफ्ट हैंड साइड से. लेट्स डू दैट. ID इज इक्वल, तो ID खैर अकेला है. उसके बाद आपका x क्या हो सकता है? x क्या हो सकता है? Has to be VD, because आपने VD प्लॉट किया है x एक्सिस से. Eyes on board please. आपने VD प्लॉट किया है x एक्सिस से, है ना? ये x एक्सिस है. So therefore इसके बाद आएगा VD वाला पार्ट, which is VD by RL, rather ये माइनस आएगा. So ID is equal to VD by RL, इस साइड से आएगा, प्लस V by RL. So आप मुझे बताएंगे, आप लिखिए. हाँ क्या किया? V by नहीं 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 नहीं. जब वो जीरो है, that is a different condition, but this is the complete equation for your ID. Complete equation for ID is this. So anyways, therefore from comparing equation 2 with the equation of straight line, we have y is equal to ID, x is equal to VD, M, that is the slope, is equal to minus 1 by RL. This is the important point. You just please note it down. And your C is equal to V by RL. How many minutes left for the class? How many minutes left for the class? हो गया मत बोलो. How many minutes? I need a value. 0 or minus 1? 0 चलेगा अभी. 0 is still a number. Anyways, well, this is done. So C is equal to V by R. पॉइंट जो है, फाइनल पॉइंट मुझे ये बोलना है. पॉइंट नंबर 1 लिखो. उसके बाद therefore ये आप रिलेट अप खुद करेंगे इसको, स्ट्रेट लाइन को. therefore slope M is equal to minus 1 by RL indicates, therefore slope M is equal to minus 1 by RL. क्लास किसकी है? अच्छा, अलग अलग शहरों में है आज क्लास. ओके. So M is equal to minus 1 by RL indicates that the slope is negative. M is equal to minus 1 by RL indicates that slope is negative. Point number 1. Point number 2. As RL increases, the slope will decrease. The slope will, है ना? Slope किसके बराबर है? M is equal to 1 by RL. RL बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो ओवरऑल क्वांटिटी कम होगी ना. Therefore the slope decreases. Hence it will result in a new load line A dash B. ये लिखो. Therefore if RL increases, it will slope decreases. This will result in a new load line denoted by A dash B in the graph, and will result in a new Q point denoted by A dash B in the graph. ग्राफ को देख लो, A dash B यहाँ पे है. B सेम रहेगा. Denoted because देखो B इसलिए सेम रहेगा because यहाँ पे RL कहीं है ही नहीं, और यहाँ पे क्या था? RL था. तो इस पॉइंट एंड पॉइंट में आइज ऑन बोर्ड प्लीज. गुड क्वेश्चन. बी सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? बी सेम रहेगा. क्यों रहेगा सेम?
अरे भाई B क्यों सेम रहेगा? बिकॉज उसमें RL का कोई मुदाखलत है ही नहीं, जबकि ये वाला पॉइंट इट वाज V by RL, so this point will anyway decrease, starting point, तो slope भी क्या हो जाएगा? Decrease. This will result in a new load line A dash B and a new operating point Q dash of the diode. So we understand that as we vary the parameters of a circuit, it will make an impact in the operating point of the diode. That's what we said as the first line, that it decides how the diode behaves, or it actually reflects the constraints placed by other parts of the circuit on the diode. So RL was other than diode, but because of this RL, our operating point has decreased or shifted. ठीक? Is that okay? Now assignment for you is, what will happen if RL decreases? Assignment for you? No, not optional. It has to be done. दो तीन लाइनें हैं total. What will happen if RL decreases? And this, by the way, is an important question. Do not just go through it. You go for every bit of this. इसके बाद क्या है सर? न्यू लोड लाइन रूट बाय A dash B उसको And will result in a new Q point. Simple है ना? मतलब Q point पहला ये था, नया Q point obviously इससे अब नीचे कहीं होगा, ठीक है? ये आप खुद डिसाइड करो ना, ये आप खुद डिसाइड करो। क्या बोला मैं? नया? जोर से बोलो क्या? ये वाला है ना Q dash, या कुछ भी है Q2. With that we can leave, and that's the end of the story for today.